Hello, class 7. As you know, my name is on the screen. I am Mrs. Nilofer Ejaz. I am your science teacher. I hope you all are fine and safe at home. Take all the precautionary measures which are described time to time by the doctors and your elders and be safe with the COVID-19. Right? It is a disease, it is a pandemic disease, and you should be very careful for yourself and for your safety of your family. Now, on your screen, you can see chapter electricity, and this is the lecture number 24. Before going to the lecture number 24, I would like, because after 1 week we are getting the class, after Thursday we are getting the class, so I would like to revise some points of the previous lecture, that what we have learned in the previous chapter. कि हमने इससे पहले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था उसके बारे में जानना चाहेंगे. First of all, we have studied the electric current. What is electric current? Electric current is defined as the rate of flow of electric charges. जितना भी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करता है उसकी रफ्तार, उसका रेट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. The SI unit for electric current is ampere and denoted by A. Current is measured by using ammeter. हम ammeter use करते हैं. Ammeter should be connected in a series with the component of the circuit, that is the battery, switch, or whatever the appliances are attached in this circuit, they must be in series. Second thing we studied, that was the voltage. Voltage is defined as the amount of energy supplied by the source of electric energy to each unit of electric charges. The SI unit for voltage is volt and denoted by capital V. Voltage is measured by using voltmeter. Voltmeter जो है उसके जरिए इसको यूज किया जाता है. The voltmeter should be connected in parallel with the component in the circuit. Parallel circuit में इसको यूज किया जाता है. Third thing हमने पढ़ी थी resistance. The resistance is a ratio between current, voltage and the current. The resistance of an electric component is defined as the ratio of voltage across the component to the current following through it. That is, R is equal to voltage divided by the current. The SI unit for resistance is ohm. Ohm is on the name of scientist. Then we have studied that we have two types of circuit, series circuit and the parallel circuit. A series circuit is one that connects an electrical source with its component one after the other, forming a single loop. The current flowing through each electrical component in a series circuit is same. If we add more components, then it will increase. And if we use the second circuit, that is called parallel. A parallel circuit is one that is split into two or more branches with connected electrical component. That is, that circuit is found in branches in uh, different portions. The current flowing through each branch in the parallel circuit may be the same or different, but it is definitely less than the current flowing out from the source. If we add more components, then the current will be decreased. That much we have studied in our previous chapter or previous lecture.
Now you can see there is a heading on your screen, that is Ramla Alvi, why are you raising hand? Ramla Alvi, why are you raising hand? If anything, if you are not getting voice or something like that, then write it in the chat box. I am talking to Ramla Alvi. Okay, Ramla, unnecessarily do not raise the hand. Now, on your screen you can see heating effect of an electric current. Whenever electric current is used or any electrical gadget we use electric current, they become heater because they produce a heating effect. Clear? When electric current is passed through a wire, some of the electrical energy is changed into heat energy. The law of heat energy is that the energy neither be created nor be destroyed. ना तो एनर्जी क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉयड होती है. It changes one form to the another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है. During this change, some of the energy is lost as a heat energy. कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. When electric current is passed through a wire, जब किसी इलेक्ट्रिक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, some of the electrical energy is changed into heat energy. The current is flowing, the current is moving through the wire, wire के through करंट मूव कर रहा होता है, लेकिन कुछ एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है और इट चेंज इनटू हीट एनर्जी एंड द वायर बिकम लिटिल बिट हॉट. वायर जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है. Appliances shown here have heating element inside them. I will show you some appliances. Yes, these are the appliances. Just wash them, then we will talk about them. This is a rice cooker. This is a rice cooker. This is hair dryer. This is the light bulb. It is a common iron. Common iron and the electrical toaster. Right? These are the appliances which I showed you. They have having element inside them. They have a special type of wire in them, and these wire, when electricity or the electric current is passed through these wires, some of the electrical energy change into heat energy, and this heat energy is enough to run these appliances. The heating element is usually made up of nickel wire. There is a special type of wire of special material or the element which is called nicron, and the wire is called nicron wire because it has a high resistance and a high melting point. High resistance means
with very high amount of heat, it will not melt. It has a power of tolerance. It will resist against the heat. So these appliances, they are provided with a special wire, and that wires are called nichrome, right? On your screen, there is a page of your book and you can read it. I am going to read it for you. मैं आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ कि हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है. When electric charges move through a wire, they lose some of their energy to the atoms in the wire. On receiving the energy, the atoms vibrate more and the wire heats up. Some of the electrical energy is changed to heat energy. The larger the resistance of the wire, the greater is the amount of heat produced. This is also true for a current flowing through a resistor. What are resistors? रजिस्टर मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है क्या चीज है. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच आर स्पेशली मेड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर. ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसे कंपोनेंट जो स्पेशली बनाए गए हैं कि जो रेजिस्टेंस को रेजिस्ट कर सके, उनको रेजिस्टर्स कहते हैं. तो जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजारी जाती है तो एटम उस वायर के जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं एंड द वायर बिकम हीट अप, और हाँ वायर जो है वो गर्म हो जाता है. सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू हीट एनर्जी. कुछ एनर्जी उसमें से हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है. The larger the resistance of wire, वायर के अंदर जितनी ही रेजिस्ट करने के एनर्जी को रेजिस्ट करने की पावर होगी, उतनी ही ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी. दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर. ये बात रेजिस्टर के लिए भी बोली जाती है या बताई जाती है. An electrical spray foam cutter makes use of the hot wire to cut or melt spray foam board into a various shape and size. आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिकल कटर आता है जिसको स्प्रे फोम कटर कहते हैं, जिससे आसानी से कटिंग और मेल्टिंग का काम, क्योंकि वो चीजों को बहुत हाई हीट पर मेल्ट कर देता है. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस. ये हीटिंग इफेक्ट जो है डेंजरस भी हो सकता है. Many house fires have been caused by the overheated fault electrical wires or appliances. बाज़ दफा क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे होते हैं, उसके वायर कमजोर पड़ चुके होते हैं और इतने ज्यादा हीटअप होते हैं कि वो रेड हॉट होने के बाद उसमें फ्लेम पकड़ लेता है. However, this heating effect can also be great one, लेकिन इनके बहुत से फायदे भी हैं. Many appliances can safely convert electrical energy to heat energy, which is then used for various purposes. बहुत सारे appliances ऐसे होते हैं कि जो हम various purposes के लिए यूज करते हैं. For example, we have a rice cooker. राइस कुकर में हम राइस डाल के एक टाइमर लगा देते हैं और राइस उसके अंदर उस टाइमिंग में कुक कर तैयार हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द हेयर ड्रायर. व्हेन योर हेयर्स आर वेट और यू वांट टू गिव देम सम शेप, वी यूज हेयर ड्रायर. हेयर ड्रायर में के अंदर ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पर वायरिंग होती है और ये वायरिंग हीटअप होकर यहाँ से हॉट एयर इसमें से निकलती है. Then next is the toaster. Electrical toaster, you all know very well. Here inside you can see the wirings are here. इस हिस्से में wirings होती हैं, एक कॉइल की शक्ल में वायर्स होते हैं और ये इनके थर्मोस्टेट्स और टाइमर्स हैं और इनमें हम आसानी से टोस्टर को टोस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आप देख सकते हैं एक बारीक सा वायर नजर आ रहा है. ये वायर जब हीटअप होता है, इस वायर के इस बल्ब के अंदर
एक वैक्यूम में एयर मौजूद है और जैसे ही ये वायर हीट अप होता है एयर के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं और स्टार्ट ग्रोइंग। नेक्स्ट इज द आयरन स्त्री है हमारे पास। स्त्री के यहाँ अंदर की साइड पर एक खास किस्म की प्लेट लगी होती है जो कि हीट रेजिस्टर है और जैसे ही हम यहाँ से वायर से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं ये प्लेट गर्म होना शुरू होती है और इसके नीचे की जो इसकी लास्ट प्लेट है उसको हम स्त्री के लिए आयरन के लिए यूज कर सकते हैं। In the picture you can see a very well designed राइस कुकर। ये एक राइस कुकर की टाइप है, एक ये टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास हेयर ड्रायर। दिस इज द हेयर ड्रायर। इट इज यूज फॉर द ड्रायर to dry the hair, to make the hair dry, or to shape them, or to straight them. And the girls very well know about hair dryers. Even the boys, they also use hair dryers. Next is the bulb. This is a bulb, a lighted bulb, and you can see inside the bulb wirings are here. These are the wiring and they are the coil structure. Here the air is blocked air is present and this gas when this wire heat up it blows up and the air inside the bulb it also blows up. In this way a bulb heat up and it gives us light. And this is the structure of a bulb. You know the bulbs are commonly used. We are not talking about the LEDs or the other things. When electric current flows through a high resistance wire like the one in the tungsten filament, you can see this is a bulb. It is made up of glass. This is a glass bulb. This is a special wire. That wire is called tungsten filament or the wire. It is the inert gas. This is filled by means of inert gas. This is the glass mount. This is the structure which is called glass mount and this is a cap which we put inside the socket. जिसको हम socket के अंदर डालते हैं. When electric current flows through a high resistance wire like the one in the tungsten filament lamp, it may get so hot that it glows, give out white light. The diagram below shows the filament of a lamp. The filament is a coil of wire which has been coiled again to form a coil. What the purpose of having a coil? This is the purpose. It increases the area. ये area बढ़ा देता है. There is a quoted in the book you can see and you can draw it easily. आप इसको आसानी से बना सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं उसके अंदर रेजिस्टर्स लगे होते हैं. The temperature of the water flowing out from the instant heater can be changed by adjusting its temperature knob. आपके पास हीटर अगर आपके पास घर में मौजूद है और उसके अंदर आप पानी बॉईल कर रहे हैं तो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे आप उसको लाकर सेट कर देते हैं. तो सेटिंग से क्या होता है कि आपको जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो आपको मिल जाता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हम आगे चलें या इसको आगे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है. नेक्स्ट इज द टोस्टर. Different type of toasters are available in the market and nowadays you are very much familiar of the toaster. What is a toaster? It is a kind of heater. ये एक तरह का heater होता है. Inside the body, this is the outside the body. There are two portions. In this portion, inside, if you have a toaster at home,
You check it, you can watch it. There are uh, structure here to there. The structure, that structure is made up of a coil. These structures are made up of coils, and these coils, when the electricity pass through them, they get hot, and anything toaster or buns you put there, they toast. And the timer, this is the timer, and this timer, it will वर्क अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड टाइमिंग. जितनी आपको टाइमिंग है उतने टाइमिंग तक के बाद इट विल फ्लंक आउट, और ये टोस्टर जो है इसमें से टोस्ट को बाहर फ्लंक आउट कर देगा, बाहर पुश कर देगा. नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी एन आयरन. This is a steam iron. Steam iron, we put water here, somewhere here we put water, and from these knobs the water, hot water, it comes out, and this plate, it press the cloth, it press the cloth. ये प्लेट जो है इसको गर्म करती है. आप यहाँ पर देखें, दिस इज द सोर्स सप्लाई. ये थर्मोस्टेट है, जितनी आपको हीट रखनी है वो आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं. दिस इज द एरिया वेयर यू पुट सम वाटर. इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ पानी डालेंगे. ये पानी स्टीम बनकर यहाँ से निकलता है, कपड़े को नम करता है, एंड यू कैन आयरन इट इजीली. दिस इज द बेस ऑफ द प्लेट. ये इसकी बेस है और ये इसकी प्लेट है जिस पे ये वर्क करता है, आयरन वर्क करता है. हीटिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसको हम मुख्तलिफ चीज़ों में यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल करंट के बहुत सारे इफेक्ट है. हीटिंग इफेक्ट भी है, केमिकल इफेक्ट भी है, मैग्नेटिक भी इफेक्ट है. वी विल स्टडी वन बाय वन. हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे. आज हम कवर कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट को. ये appliances, the heating effect of an electrical current is used in rice cooker and water heater and iron and many other things. I will repeat again once. Now, these are the heating effects that are used in different appliances. Like rice cooker, we use heating effect. The heat, we use the heat, and the rice are cooked. Next is the hair dryer. You can see a hair dryer is on your screen. This hair dryer, it will make your hair dry. If you have a party, you can arrange or you can give a style to your hairs. What happened? This is the gadget. When we connect it with wire, there are the knob for the speed. There is the area where motor is present, and in this area wires are present, and these wires, when the current is passed through these wires, they become hot. And when they become hot, the hot air, it comes out and we can use it. Next is an electric bulb. This is the common electric bulb. Nowadays we are not using such type of bulb. We have LED type of bulb, but this is the first bulb which was invented for the convenience of human being. You can see the structure of the bulb. This is the structure of bulb. Its body is made up of glass. This is the body. It is made up of glass. Inside the bulb, this is an empty space. It is filled by means of inert gas. And this is the wire, which is very special, and it is made up of an element which is called tungsten element,
and this filament and this wire is tungsten filament. It is called tungsten filament. It has a very high melting point and very high resistance power. And the next to that, you can see there is a structure which is called glass mount. This is the glass mount and this is the cap. This is the portion we insert inside the socket, and when you open the bulb, electric current flow passes through the cap, glass mount, and it goes to the tungsten filament. This tungsten filament wire, it becomes hot or it heats up, and due to heat, the molecules of the inert gas, they move very fast, and due to this movement and their colloidal particles of the inert gases, this bulb glows. Next is the toaster. You can see a toaster on the screen. This gadget is commonly found in our homes. ये हमारे घरों में commonly पाया जाता है. This is the toaster in which there is a thermostat. This is a timer, or you can say it is a timer. आपको कितनी देर के लिए लगाना है, उतना आप उसको नॉब को मूव कर दोगे और उतने टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. There is a structure. When we keep it down, ये टोस्टर की स्पेस बनती है और जब ये बन जाते हैं तो इट फ्लंक्स आउट, ये बाहर निकल कर आ जाते हैं. दिस इज द एरिया. ये वो एरिया है जहाँ पर कॉइलिंग्स होती है, वायर्स मौजूद होते हैं इनसाइड, और जैसे ही आप उसको हीट अप करते हैं, ये कॉइल हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. इनके गर्म होने से टोस्टर जो है वो टोस्ट को, ब्रेड को सेक देता है, फ्राई कर देता है और रोस्ट कर देता है, टोस्ट कर देता है, और इसका जो है इसको टाइमिंग के हिसाब से फ्लंग आउट करके बाहर निकाल देता है. दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकेंड टोस्टर. आई कलेक्टेड दिस फॉर यू. नाउ द नेक्स्ट इज द आयरन. नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास क्या चीज़ है? आयरन. आयरन बहुत टाइप्स की होती हैं. हम यूज कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल आयरन. ये स्पेशल टाइप की आयरन हमने आपके लिए सेलेक्ट की है. इस आयरन में आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे से होल्स, यू कैन सी स्मॉल होल. फ्रॉम दीज होल्स the water we put inside the iron, it comes out in the hot steam. This is the complete structure. This is the connection. This is the timer or the heat or the requirement of our iron. हमें कितना hot iron को रखना है वो यहाँ पे इस knob के ऊपर according to our clock यहाँ पे नंबर डले होते हैं. And this is the area where we put water. ये एरिया खुलता है, फिर हम पानी डालते हैं, और ये पानी जब हीट अप हो जाता है इस एरिया के अंदर, ये जो वाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक खास किस्म की प्लेट लगी होती है, और ये रजिस्टर है एक तरह का, और ये रजिस्टर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से गुजारते हैं ये इसमें से पास आउट होती है. ये इसमें से पास आउट होती है, स्टीम अप होती है, और स्टीम अप होने के बाद यहाँ से स्टीम के साथ ही हीट बाहर आती है, और इस हीट से हम आयरन को गर्म करते हैं. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन है इलेक्ट्रिकल कैटल. इलेक्ट्रिकल कैटल वी यूज टू मेक द वाटर हॉट. हम पानी को गर्म करने के लिए यूज करते हैं. ये एक इनसाइड स्ट्रक्चर है इसका, और यू कैन सी देयर इज अ सोर्स. ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये इसके अंदर आ रही है. ये इलेक्ट्रिकल केटल की पूरी टोटल बॉडी है आउटसाइड. ये बॉडी आउटसाइड है. इनसाइड यहाँ पर आप देखें एक प्लग है, और उसके साथ ही यहाँ पर
हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। हीटिंग एलिमेंट यानी एक खास किस्म का वायर लगा है जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। इसमें हम पानी डालते हैं। When we put on or off switches here, when we require hot water, हम इसको ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करती हुई आती है, इस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में से जब गुजरती है, पूरी इसमें से गुजरने के बाद इसको हीटअप करती है। ये वायर हॉटअप होता है। हीटअप होने के बाद ये पानी को गर्म करता है, और जब पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाता है तो ऑलवेज सम टाइम देयर इज अ विसल, यहाँ पे एक विसल लगी होती है, और ये विसल जो है बता देती है, अलार्मिंग होती है, और जितना भी आपको टी बैग डाल के चाय बनाना हो आप उसको बना लेते हैं। नाउ फॉर योर कन्वीनियंस I would like to show you a uh, electrical kettle, how it works. Electrical kettle आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मुझे मिली थी, एक वीडियो मिली थी। इट इज़ नॉट अ लॉन्ग वीडियो, इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो, और आपको ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। आई कलेक्टेड इट फॉर यू, आई शो यू, मैं आपको भी इसको दिखाती हूँ। बट वन थिंग मोर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपको जो भी काम दिया जाए, जिस कॉपी पे दिया जाए, काइंडली उसी कॉपी पे किया करें। अगर आपने वो काम पहले कर लिया है तो उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे आप। जो काम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में था वो काम बेटा हमने, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में भी पढ़ाया था, वर्चुअल क्लासेस में भी, तो वो काम कुछ हमारी कॉपीज पे मौजूद था। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड द रिवीजन वर्क, हमने ये काम रोक के रिवीजन स्टार्ट कराया था। तो कुछ बच्चों के पास कंप्लीट काम है, कुछ के पास नहीं है। जिनके पास इनकम्प्लीट काम है, आपके पास असाइनमेंट आपकी क्लास में मौजूद है, आप उनसे निकाल के उनको कंप्लीट कर लीजिए और कॉपी चेकिंग के लिए भेज दीजिए। और अदरवाइज यू हैव नो नीड टू डू इट अगेन, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमने ये काम कर लिया है, क्या हम दोबारा करें और किस कॉपी पे करें। देखिए, एवरीथिंग इज इन फॉर योर इंफॉर्मेशन इज इन योर क्लास। आपकी क्लासरूम में हर चीज़ इन्फॉर्म की जाती है, आपको बताई जाती है, और वही सवाल आप दोबारा दोबारा नहीं किया करें कि आपने ये काम कहाँ करना है, ये कर चुके हैं तो दोबारा करना है। जो काम आपने नहीं किया है वो आप करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, और जो आप कर चुके हैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आई स्टार्ट द वीडियो एंड यू विल लाइक इट। ये छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखें और इसको समझने की कोशिश कीजिए। Now you can see the electrical kettle in your book. The heating element is usually made up of nichrome. कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? निक्रोम वायर। और if high resistance, it is high resistance and high melting point. Connecting wires, on the other hand, should be made from the low resistance material
सच एज कॉपर। जो कनेक्टिंग वायर है जो उसने कनेक्ट किया हुआ है, स्विच से जोड़ा हुआ है, उसका काम क्या है कि वो सिर्फ उसको रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। This reduces the amount of heat produced in them when current flows through them. इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है और उसके अंदर से गुजरने में उसको मदद देता है। Now class, this was all about your lecture today about the heating effect of an electric current. The electric current का heating effect क्या होता है? I hope you learn it a lot. आपको अच्छी तरह से समझ होगी आगे होगी. And once again, I have 2 or 3 minutes. I would like to play. I like this video very much, and I would like to play it again for you. And this was about the electric bulb. This is the contact, this is the area where you put the bulb in the socket, and you can see a glass support. This is the glass support, it is called glass mount. Then it leads, this connection leads to the wires. The wires we are using is tungsten filament. They are much coiled structure. Coiling क्या है? इससे एरिया इंक्रीज हो जाता है, मच एरिया इज कवर्ड। बहुत सारा वायर जो है वो छोटे से एरिया को कवर कर लेता है। दिस बल्ब इज फिल्ड बाय मीन्स ऑफ इनर गैस। ये इनर गैस से फिल्ड अप होता है, भरा हुआ होता है। व्हाट हैपन when you connect this wire in the socket and switch on this electrical current